हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसक्यूएस क्लासेस। आज हम 10th क्लास के लिए आगे कर रहे हैं। इसमें हमारा सिलेबस पूरा हो गया था। इसमें हमने क्या किया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम 2025 चैप्टर वाइज वी आर डूइंग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 over. Now today chapter 4, important question on the basis of CBSE board exam 2025 from chapter 4, quadratic equations. Okay, you know quadratic equation, ax square plus bx plus c equal to 0. If it is not 0 polynomial, then you can say for the quadratic polynomial, you know quadratic polynomial in chapter 2, if a is less than 0, the graph of that quadratic polynomial downward parabola. If a is negative, this a coefficient of x square. If a is positive, any real number positive, if a, then graph this shape and this is parabola upward. So shape, you know, parabola, shape of the graph of the quadratic equation, parabola. Okay, so this, if a is negative, downward. If a is positive, then upward. Okay, you remember these two things. Now we are doing, okay, question 1. What is question 1? Find the values of k. Find the values of k so that the quadratic equation 3kx square minus kx plus 5 equal to 0 has equal roots. Okay, you know, for the equal roots, what is the nature of the quadratic equations? If equal roots है तो what is the nature? That discriminant d must be equal to 0. Okay, conditions for the equal real roots, you know. So here has equal roots saying, so we have to use discriminant d. And what is discriminant d? D is called the b square minus 4ac. So then b square minus 4ac, this equal to 0. For which? For equal roots. Okay beta, we know this. So use this for equal roots. If 2 marks question may come in 2 marks, so you should write condition for equal roots. Okay, you should write this. Otherwise, if 1 marks directly you can do. Okay beta, orally also. Then b square, what is b square? b is here coefficient of x minus k whole square. Minus k whole square is k square. b square minus 4, a is 3k and c is 5. So 3 5 are 15k. Okay, into 15k. Okay beta, 4ac then is equal to 0. Simplify. This implies what is the value of k? K common here in these both terms. Then what will left here? K square means k left and minus 15 for the 60. Okay, this is equal to 0. Then these two factors, then each factor equal to 0. Then k equal to 0. Then also this and other value k equal to 60. Okay beta, clear? So these two values of k answer. Option question also may be there. So you be careful about this. Done. Yes, now question number 2. The quadratic equation 3x square minus 5x minus 8 has roots alpha, beta. Find the other quadratic equation
whose roots are 1 upon alpha square comma 1 upon beta square. So another quadratic equation you have to find whose roots 1 upon alpha square comma 1 upon beta square. So how can do this question? You know sum of the roots minus b upon a. तो means alpha plus beta solution, sum of the roots minus b upon a, then this b is here minus 5, then minus plus 5 upon a is 3. Okay, now product of the roots alpha into beta is equal to c upon a. C is minus 8 upon a is 3. Okay, now these both use in this new sum. New sum means means 1 upon alpha square plus 1 upon beta square. Then sum LCM is alpha square into beta square. Okay, simple. Then LCM लेकर इधर बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर, then alpha square plus beta square. How can find these value? From the equation 1. This equation 1 full. ठीक है, तो alpha square plus beta square we know. How can find this? We know alpha square plus beta square, alpha plus beta whole square, a plus b whole square equal to a square plus b square plus 2ab. तो means this a square plus b square equal to a plus b whole square minus 2ab. तो minus 2 alpha into beta. This is the identity only. From that we have taken alpha square plus beta square value will be equal to alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta by the identity whole square and alpha square into beta square. Then value we can put, we have here both values, alpha plus beta value 5 upon 3, put here 5 upon 3 whole square, then 25 upon 9. Okay, clear? From equation 1 and minus alpha into beta value minus 8 upon 3, तो minus 2 into alpha into beta minus, तो minus plus, then 8 2 into 8 upon 3 multiply. Okay, then what will come? Simplify. So this LCM is 9. Okay, LCM is 9, then 25 plus 2 8 is 16. Okay beta, only numerator solving this, divide by, then full we can solve together. Okay, chalo together we can solve, divide by full, alpha square beta square means whole square both side, then 8 8 is 64 upon 9, negative whole square positive upon 9. Okay, numerator also fraction, take LCM in numerator, then solve 9 LCM in numerator, then 25 and plus 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 6 8 जा 48,
2 into 8 into 3 and divide by 64 upon 9, then multiply reciprocal of the denominator fraction 9 upon 64. 9 cancel to 9, simplify, then this implies what will come? 25 plus 48, 8 plus 5, 13, carry 1, 4 plus 2 and 1, 7, divide by 64. Okay, this we can't solve, simplify, this is only sum of the zeros. Okay, now product, new product of the zeros. ठीक है, तो प्रोडक्ट मीन्स 1 upon alpha square, one root, other is 1 upon beta square, multiply of both. Okay, then this, use equation 1, product here minus 8 upon 3, alpha into beta is there, so then this is 1 upon alpha square into beta square. So alpha square into beta square, any whole square both side, then 8 8 is 64 upon 9. 1 divided by 64 upon 9, so 9 will go up. Okay, clear? So this is 9 upon 64. Understand? To use these value, product, this value sum, so quadratic equation, so required quadratic, okay, equation, required quadratic equation, what will come? That will be x square minus sum of the, sum of the roots. So sum of the roots, this 73 upon 64. Sum of the roots into x and plus product of the root 9 upon 64. 9 upon 64 is equal to 0. Then 64 से मल्टीप्लाई किया, then 64 x square minus 73 x and plus 9 is equal to 0. Done. This is your quadratic equation required. Done. Now next question. Question number 3 is, if one leg of a right triangle is 7 centimeter less than the other leg. Legs of a right triangle except the hypotenuse, both sides are called the legs of the right triangle. Okay beta? So and hypotenuse is 13 cm and find both legs. So let one leg is solution. Let one leg is equal to x centimeter. Okay, solution. Relation 7 centimeter to the other. So it means 7 centimeter less the others. So other leg x plus 7. कि one is 7 centimeter less than the other, so other x plus 7 if one is x.
this, then hypotenuse given, how much? 13 centimeter given. So we know by the Pythagoras theorem, use Pythagoras theorem. In right triangle we know use Pythagoras theorem. What is that? Hypotenuse square direct 13 square is equal to sum of the square of other two sides. One side is x square, other leg is x plus 7, then x plus 7 whole square. Okay beta, this by Pythagoras theorem. Then it will be quadratic equation you can solve. X square whole square you can solve. A square means x square plus b square plus 2ab. So plus 2 7 ja 14x and plus 7 7 ja 49. A square plus b square plus 2ab is equal to 13 square 169. Okay beta, then 149 this side will come. Okay, so subtract 49 from the 169, so 120. Okay, and then add both these like term, then 2x square and plus 14x. Okay beta, then you can solve. One side you can take 120 that side, or 2 highest common factor divide by 2, then it will be reduced into simplest form x square plus 7x, okay, and minus 60 divided by 2 is equal to 0. Done. This is your quadratic equation. Then you can solve, because you have to find solution of quadratic, factor, middle term splitting, okay, or quadratic formula. Two methods are there. So if you take here 12 5 ja 60, 12 minus 5 7, so middle term splitting, okay, plus 12 minus 5, one factor negative, one positive, then product minus 60. Okay beta, so 12 minus 5x, then 7x splitting, and minus 60. So by factorization method you can solve. Okay, if not possible factors, then you can use the quadratic formula. Then here x common, what left here? X plus 12. Okay beta, then minus 5 common, both term negative, then positive will come, then x plus 12, done, is equal to 0. Then two factors, one factor x plus 12, other factor x minus 5 is equal to 0. So each one put equal to 0, then implies that x is equal to minus 12 and x is equal to 5. So minus 12 rejected. Okay, so this implies this is rejected.
negative not possible, length of the side, then x is equal to 5. So one is 5 centimeter, other x plus 7, that will be 12 centimeter. So both legs answer 12 centimeter and 5 centimeter. Okay. Now next question. Yes. Now question number 4 is a train travels a distance of 480 kilometer at a uniform speed. If the speed had been 8 kilometer per hour less, यानी अगर उसकी 8 किलोमीटर पर आवर स्पीड कम हो जाती तो क्या होता, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर. स्पीड कम हो जाने से 3 आवर्स मोर, 3 घंटे ज़्यादा लेती टू कवर द सेम डिस्टेंस. डिस्टेंस कितनी है उसकी, 480 किलोमीटर. सेम डिस्टेंस को कवर करने में फिर टाइम 3 आवर्स ज़्यादा हो जाता अगर स्पीड कम हो जाती. कितना कम हो जाती, 8 किलोमीटर पर आवर. तो फाइंड द स्पीड. तो सॉल्यूशन, लेट स्पीड ऑफ द ट्रेन. ओके बेटा, स्पीड उसकी ओरिजिनल स्पीड, लेट x किलोमीटर, लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल x किलोमीटर पर आवर. हमने मान लिया, ठीक है बेटा. लेट अस सपोज कि उस ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर ओरिजिनल स्पीड थी उसकी, ठीक है. उसमें क्या बन गया, उसका ओरिजिनल टाइम निकाल लो. तो टाइम कितना हो गया, टाइम फार्मूला, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है बेटा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड वी नाउ, ठीक है. देन डिस्टेंस 480 किलोमीटर गिवन एंड स्पीड इज हमने x मान लिया. सो दिस आवर, ये टाइम हो गया बेटा, ठीक है. दिस टाइम फ्रॉम द फर्स्ट, नाउ इन द सेकेंड it would take the 3 hour less if speed 3 hours more, if speed less 8 hour less. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्पीड अब कम हो जाती है. स्पीड कितनी हो जाती है, x से वो 8 किलोमीटर पर आवर लेस, तो -8 न्यू स्पीड आ गई है. ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ स्पीड दिस किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा, देन टाइम टेकन 3 लेस. तो हम टाइम निकाल रहे हैं, सेकेंड टाइम. तो टाइम कितना निकलेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस तो सेम है 480 किलोमीटर, सेम डिस्टेंस. ओके, डिवाइड बाय स्पीड यहाँ बढ़ गई है तो x प्लस 8. जब स्पीड बढ़ गई तो टाइम, स्पीड लेस, सॉरी नॉट वर्ड, स्पीड लेस x माइनस 8, सॉरी स्पीड इज x माइनस 8 लेस, कम हो गई. जब स्पीड कम हो गई तो टाइम ज़्यादा होगा ये. तो दिस टाइम इन आवर्स, ये ज़्यादा होगा टाइम. तो दिस टाइम एंड दिस टाइम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3 आवर्स मोर है. सेकेंड टाइम 3 आवर मोर, तो सेकेंड टाइम 480 अपॉन x माइनस 8, दिस टाइम माइनस फर्स्ट टाइम 480 upon x, then this difference must be equal to 3 hours according to question. ठीक है. So simplify LCM. What is LCM? Product of this x into x minus 8, LCM डिनोमीटर्स का. देन x मल्टीप्लाई 480x
480x, ओके बेटा, एंड माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8, तो 480x माइनस 480x, ओके, एंड देन माइनस एंड माइनस प्लस, बी केयरफुल दिस, माइनस 480 है और माइनस 8 है, तो प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 800, 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 एंड 6, 32 एंड 6 38, ओके, ठीक है। नाउ सिंप्लीफाई, कैंसिल, ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 3। नाउ सिंप्लीफाई, 3 विल गो दैट साइड, मल्टीप्लाई, तो 3 इंटू एक्स, 3x इंटू एक्स माइनस 8, तो दिस इम्प्लाइज 3x इंटू एक्स, 3x स्क्वेयर, ओके बेटा, एंड 3x इंटू माइनस 8, तो माइनस 3 8 जा 24x, ओके बेटा, इज इक्वल टू 3840, तो माइनस 3840 इक्वल 0 कर दिया हमने, ओके, क्लियर। I have taken that term also here, this cross multiply, okay, and this right hand, then I taken this side, simplify. Now simplify this, or we can say simplest form 3 से divisible है, okay, तो x square, every term is divisible by 3, divide by 3, तो x square minus 8x, okay, and divide by 3, then 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 24, 3 8 जा 24 and 0, then is equal to 0. This is quadratic equation, we have to solve, okay, middle term we can split it and we can do, okay, simplify, how can do, इसके फैक्टर कर लें, कितना, ये आपका 4 या 12, 40 और 48 है ना, नहीं 40 और 38 हैं, 38 नहीं, ये बनेगा, इसके फैक्टर देख लो, ओके बेटा, 36 और 8 8 6 ये बनाओ 24 और 32, ओके, इनका मल्टीप्लाई देखो, 4 दूनी 8, ओके, और 2 से 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 3 चौक 12, 2 दूनी 4, 12 और 4 16, 1 3 दूनी 6 1 7, ये बनता है, ये ज़्यादा हो गया, तो ये आपके फैक्टर करने पड़ेंगे, फैक्टर करके देख लो, ठीक है बेटा, कैसे, इसके फैक्टर 1280, ओके, बड़े नंबर से देख लो, बिकॉज हमें तो 2 फैक्टर बनाने हैं, 4 3 जा 12, दिस 8 4 जा, ओके, 5 8 जा, तो 5 8 40, 8 चौक 32, 32 और 40, 8 बजे, 40 एंड 32, 32 एंड 40, ये 2 बन गए, देखो 0 4 दूनी 8 4 3 12, ठीक है, 32 एंड 40 2 फैक्टर, ओके बेटा, 32 एंड 40, 32 एंड 40, ओके, माइनस के 32, मिडल टर्म स्प्लिटिंग,
-32 +32 एंड -40, माइनस के 8 चाहिए ना, -40 देन -8 डिफरेंस, ठीक है, एंड प्रोडक्ट दिस -1280. Splitting the middle term, you know, and solve, then it will come, what will come, x common, then x plus 32 and minus 40 कॉमन, माइनस कॉमन तो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे, तो x प्लस 32 इक्वल 0. तो 2 फैक्टर्स, ओके, क्लियर. तो यहाँ से रब कर दूँ मैं, ओके, यहाँ सॉल्व कर लें. इसके बाद हेयर व्हाट विल कम, 2 फैक्टर्स, x प्लस 32 and other factor x minus 40, okay, is equal to 0. then solving each factor equal to 0. तो x की वैल्यू एक तो आ गई, -32 नेगेटिव रिजेक्ट हो जाएगी, और यहाँ से x वैल्यू 40. तो पॉजिटिव इज़ पॉसिबल, नेगेटिव नॉट पॉसिबल, तो किलोमीटर पर आवर. दिस इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन. दिस रिजेक्टेड, ओके, ये रिजेक्टेड हो गई, क्यों, नेगेटिव स्पीड, नेगेटिव नॉट पॉसिबल. डन, आंसर. We can do like that, okay. Now one question more we can. Hello, now this question next. Find the roots of the quadratic equation 3x square minus 2 root 6x plus 2 equal to 0. By factorization method, if saying, then you should use the factorization method, or if not saying, you can use anyone. So I am telling by factorization method. By formula तो easy to solve. What is quadratic formula? Discriminant d, b square minus 4ac you calculate, and use the formula x is equal to minus b plus minus square root d whole divided by 2a. Then easy. But here I am telling by splitting the middle term, because it is, you must practice how can do if irrational number is there in the coefficient. तो बी केयरफुल, 3 2 जा 6, तो ए सी की प्रोडक्ट 6 है, तो 6 के 2 ऐसे फैक्टर बनाने हैं 6 के जिनका सम -2 रूट 6 हो. तो माइनस है दोनों का सम, अब प्रोडक्ट पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव चाहिए. नंबर 1, दोनों नेगेटिव चाहिए, प्रोडक्ट पॉजिटिव हो जाएगी. अब पॉजिटिव 6 है, तो इसका मतलब हो गया कि रूट 6 और रूट 6 की मल्टीप्लाई ही बनती है. 1 रूट 6 रूट 6 रूट 6 रूट 6 मल्टीप्लाई कितनी बन गई, 6, बट ये है 2 रूट 6, तो दोनों का ऐड करो, प्रोडक्ट तो हमें 6 ही चाहिए. 3 2 जा 6, डन, प्रोडक्ट डन, बट ऐड बोथ, तो व्हाट विल कम, -√6 एंड -√6 ऐड किया, -2 रूट 6, द मिडल टर्म दिस, एंड प्रोडक्ट किया तो 6. तो बी केयरफुल. तो सॉल्यूशन इज स्प्लिटिंग द मिडल टर्म 3x स्क्वायर -√6 x एंड -√6x. ओके बेटा, देन सम इज -2 रूट 6 एंड प्लस 2 is equal to 0. Done. Then now how can do common? You see √6 यहाँ है या नहीं है, 3 के अंदर नहीं है, बोलो, बट √3 कॉमन है. √6 में और 3 में √3 कॉमन है, क्यों,
क्योंकि रूट 6 कैन बी रिटर्न रूट 2 इंटू रूट 3 एंड 3 कैन बी रिटर्न रूट 3 इंटू रूट 3, तो वन रूट 3 फैक्टर इन बोथ, so root 3 is a common factor in both. This is the most important thing. Root 3x is the common factor in 3 and the root 6. तो 3 में से रूट 3 कॉमन लिया तो रूट 3 लेफ्ट हेयर, बिकॉज रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, एंड एक्स स्क्वायर में से x कॉमन x, एंड हेयर रूट 3 कॉमन, देन रूट 2 विल लेफ्ट हेयर. अंडरस्टैंड? Root 6 has the two factors root 3 into root 2 and this x is common. Then here minus common and 2 and the root 6 में root 2 is common. Root 2 here 2 has the two factors root 2 and root 2, and root 6 has two factors root 2 into root 3. So root 2 is the common factor in these both. Be careful. Then here what will left? Root 3. This is the important due to this. Root 3x will left here, and here minus common, then sign change minus, and root 2 common, then root 2 will left here is equal to 0. This is the important step here. ठीक है बेटा? Then now easy to do after that. Root 3x minus root 2, root 3x minus root 2, one factor, root 3x minus root 2, irrational factors, and other factor root 3x minus root 2, other also same. Okay, is equal to 0. Done. So both same factor, then it means root 3 x minus root 2 is equal to 0. This implies x is equal to root 2 will go that side positive upon root 3. Rationalize if you want to do, that you can do, multiply by root 3, then it will be written root 6 multiply by root 3. Root 6 upon 3 you can write. Okay, other also same, so both are equal. Okay, both roots are equal. Okay, both roots such that root 6 upon 3 comma root 6 upon 3. Answer. Okay, like this question important, middle term splitting. ठीक है? That's why I told you this. Now one question more we can do. Okay, हाँ जी. Now question 6. Next question. Find two consecutive positive integers. Consecutive means लगातार, continuous. Positive integer, जैसे एक इंटीजर को x मान लेंगे तो consecutive means कंटिन्यूअस, लगातार. दूसरा एक ज़्यादा हो जाएगा, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉजिटिव इंटीजर. तो देन इफ वन इज एक्स एनी, तो देन नेक्स्ट विल बी एक्स प्लस 1. सो सॉल्यूशन लेट 1 इंटीजर, बल्कि पॉजिटिव भी कहना चाहिए, 1 पॉजिटिव इंटीजर. ठीक है बेटा, लेट किया 1 पॉजिटिव इंटीजर x. सो अदर consecutive
लगातार, अदर कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव, ठीक है बेटा, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, वो क्या हो जाएगा x+1, ओके बेटा, दिस इज x+1 कॉन्जिक्यूटिव लगातार, हुज स्क्वायर्स सम 365, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्क्वायर्स एंड देन सम मीन्स प्लस स्क्वायर ऑफ बोथ x+1 whole square of the other and sum is equal to 365 according to question. We can say according to question. Done. So simplify, quadratic equation will come, a square plus b square plus 2ab formula, a square plus 2ab 2x and plus b square 1 square 1 is equal to 365. Okay, then solving x square plus x square 2x square and plus 2x and plus 1 and minus 365, तो माइनस 364, ओके बेटा, दिस इज इक्वल टू 0. तो दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन. नाउ वी कैन सॉल्व मिडल टर्म फर्स्ट और सिंप्लीफाई. वी कैन राइट डिवाइड बाई 2, देन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4, 182. ओके, ठीक है. तो ये 12 12 जा 144, 12 and 13, 13 and 14, 13 and 14 you can check here. 13 and 14 difference will be this. तो 14 and 13 product, 3 4 जा 12, carry 1, 3 1 जा 3 1 4, और 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, then 7 and 1 1 जा 1, 172. ओके, 3 4 जा 12, carry 1 ना, ठीक है. तो 13 and 14, सो एक्स स्क्वायर एंड प्लस के ज़्यादा लेने हैं 14 और माइनस के कम, तो प्लस 14 चूँकि +1 मिडल टर्म, तो प्लस 14x माइनस 13x. ओके बेटा, डन. एंड माइनस 182 इज इक्वल टू 0. डन. So like this you can do. Then simplify, then x common in these two terms, then x plus 14 and minus 13 common, देन x और माइनस कॉमन, देन प्लस हो जाएगा, और 13 इंटू 14 182 होता है, देन 14 विल लेफ्ट इज इक्वल टू 0. देन टू फैक्टर्स, वन इज x plus 14 and other factor is x minus 13 is equal to 0. Then each factor put equal to 0 and find the value of x. Then x is equal to minus 14 and plus 13. तो x हमारा क्या है इसमें,
दोनों पॉसिबल नहीं है क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स हैं. तो दिस इज नेगेटिव, कैंसिल, सो पॉजिटिव. सो x इज इक्वल टू 13 एंड x प्लस 1 is 14 answer. So required numbers are 13 and 14. Like this we can do. Okay, like, share and subscribe the channel and send the video to the other contact and guide them. They must watch, like, share and subscribe the channel and send the feedback in the comment box. Thank you.